वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर टर्न। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि 4 अगस्त को मैंने अपलोड किया था एम आई नोटबुक प्रो के इश्यूज़ के बारे में। एक्चुअली हुआ इस तरह था कि मैं इश्यूज़ नहीं बता पाया और काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारे नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के कमेंट्स थे जिन्होंने कहा था बोल्डली कि मैंने कोई इश्यूज़ नहीं बताया। इश्यूज़ मैं इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे मिला था, जो यूनिट मुझे सप्लाई किया गया था, जो मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया था, उसमें कुछ इश्यूज़ थे। इश्यू इस तरह था कि वो स्टार्ट होते-होते या सेटअप होते-होते ही वो क्रैश हो रहा था। किसी तरह मैं वो सेटअप कर पाया और फिर आप जैसे देख रहे हो, दूसरे दिन तक ये सेटअप होने के बाद भी, ये विंडोज़ लोड होने के बाद भी क्रैश हो रहा था बार-बार या फिर वो डिस्क चेकअप में जा रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं, माय वाइफ इज़ आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू लाइफ बट शी कुड नॉट। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो सामने, ये एक पीसी स्टार्ट था और अचानक से ये बंद हो गया है। मैंने इसे रिस्टार्ट नहीं किया, आपने देखा। और बीच में आप देख सकते हो जो कीबोर्ड लाइटिंग्स है वो भी फ्लैश हो गए, ये इस तरह से। और फिर प्रिपेयरिंग, आई डोंट नो व्हाट वाज़ गोइंग ऑन एंड देन सडनली ये स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट, बट इट गोज़ इनटू रिकवरी। ऐसा मेरे साथ कम से कम 5 या 6 बार हो चुका था नॉर्मल सेटअप के बाद। I contacted finally the MI services through chat because phone numbers they would not respond. So Vinay was the first one I talked with. He said कि put it on charging. I told him that I have put it on charging. Charging पे मैंने already लैपटॉप को रख दिया है, but charging पर भी अगर लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो what should I do? He still insisted कि आप चार्जिंग पे इसे डालिए. Then second talk I had with Devanshu, who was supposed to be a what do you say expert in that. He told me that how long it has been crashing. I told him it has been crashing since 10 to 15 times since I got it. I can send you the picture. I sent him the picture. I told him that the product is damaged, so I want a return or a replacement for it. And I tried to get this return request, but it's not working. He said, ki, okay, our executive will get in touch and he'll provide you a site where you can put up all the details. And he gave me this site. I tried to get on the site, but sadly there was no MI Notebook Pro. MI Notebook Pro का नाम ही नहीं था. तो मैं किस तरह से complain करता? I don't know. तो complain I could not do it. देन फिर से मैंने चैट पे कांटेक्ट किया कपिल से। आई गेव हिम द नंबर, ही अगेन हैड अ टॉक और इस तरह ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा एंड दिस वाज आई सपोज द थर्ड डे एंड इट वाज स्टिल गोइंग ऑन। सो ही टोल्ड मी go to the service station and show your laptop and they will give you a order id, replacement order id. So I went to service center. The service center guy was quite helpful and he told me to wait for a day and let him see what the issue is and he will definitely do the needful whatever is needed. I insisted that he could do it faster because my return days or replacement day validity that is only 7 days is going to end. I was really frustrated upon one thing that these guys did not have simple return button on that order. If you go to Amazon or Flipkart or any other sites, they always have this replacement option available after the product is delivered. So definitely I understand laptop is certain thing which seller would not like to get it back. Finally the service guy after 2 days tried to resurrect it. It could not work. Bring it to life, nahi hua. He told me to sit in the MI store and check whether the laptop is working properly because he felt it was working properly. Finally I went on and I used the laptop for a while there. This is the video from the service center itself and you can see it stopped working there, right there in front of you and in front of the serviceman. So he said, sir, leave it here, I'll do the needful. So on Monday, that is on the 6th of September, he addressed my problem and he got finally the mail from the guys, which he could not get it since he had launched the complaint. He had launched the complaint on 4th, but still he could not get it. And 6th, he got the return mail saying that the replacement is approved. And finally, my replacement was on way. Now, today, when I'm recording this,
that is on 9th of September. Now it is already 10 because it is midnight right now. I got the replacement on the 9th evening. I'm going to unbox it again and put a full user review again. So that was my MI Notebook Pro issue. The product is really good. I tried searching and I have been searching for such a product with such configuration in all the companies. Frankly telling you people, ऐसा प्रोडक्ट इतना सस्ता और बिल्ड में काफ़ी अच्छा आपको इस कीमत में कहीं नहीं मिलेगा। फ़िलहाल इंडिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है।